Okay. Yes sir, notes मिले मुझे, notes देखे. Okay, fine. So we'll do very fast now. Look at this question number 21. One question was remaining from that section. In a class of 30, total 60 students. So total 60 students are there. उसमें से 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, then 24 opted for both. So if one of these students is selected at random, find the probability that the student opted NCC or NSS. So you can name the event as, let A be the event that the student opted NCC, B be the event that the student opted NSS. So हमें first question में निकालना है what is probability of A और B मतलब union A और B. So probability of A, probability of B, so probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So now probability of A matlab those elected probability that the student selected or elected or opted NCC, which is how many 30 upon 60 plus probability of B matlab the student opted NSS, so 32 out of 60, that's the probability minus, so both 24, so 24 upon 60, so which is equal to 38 upon, correct, 38 upon 60, which is 19 upon 30, isn't it? Now the student has opted neither NCC nor NSS. That means NCC भी opt नहीं किया, NSS भी opt नहीं किया. So उसका मतलब second one ऐसे कि probability that neither NCC मतलब not selected NCC, that is A complement, and nor NSS मतलब B complement. B So and because both intersection. intersection. So A probability of A complement intersection B complement, which is equal to probability of Newton's law है, you can write it is A union B the whole complement. A union B the whole complement is A complement intersection B complement. And complement of an event, uska probability is 1 minus probability of that event, 1 minus probability of A union B, which is equal to 1 minus 19 upon 30, which is equal to 11 upon 11 30. okay. Now next is the student has opted NSS, so probability of A but not NCC and B complement. Student has opted NSS but not, so A and B complement. So it is nothing but probability of A minus probability of A intersection B. क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे this is your A and मान लीजिए this is your B, then A complement and A and B complement का intersection. So B complement मतलब B के जो outside सब कुछ. So A, so this area, this shaded area, that is A intersection. B minus. Yeah, that is A intersection B complement. So that is nothing but A से A intersection B कम कर देना.
So A intersection B complement का probability, it is probability of A minus probability of A intersection B. So probability of A, which is 30 upon 60 minus A intersection B, 24 upon 60. Correct? Am I right? NSS. Yes, sir. So NSS का कितना था? 32 था. Sorry. 32 32. upon 60 minus 24 upon 60. So which is 8 upon 60. 60. So it is 2 by 2 15. upon 15. Okay, that's it. Okay, now coming to miscellaneous exercise. Question number 1. You can see that a box contain. So you have a box. उसमें से 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 Green. green marbles. So उसमें से from here 5 marbles. 5 marbles are drawn. 5 marbles are drawn. What is the probability that all will be blue? So what is the probability that all 5 will be blue? So what is the definition? Number of favorable outcomes This is divided by total number of total number outcomes. of outcomes. Now, how many favorable outcomes are there? So आपको क्या चूज करना है? 5 marbles चूज करना है. So how many favorable outcomes? 20C5. क्योंकि ब्लू मार्बल्स कितना है? 20 ब्लू मार्बल्स. उसमें से कितना चले करना? 5. सो वी हैव 20C5 favorable cases are there. Number of combination of 20 objects taken 5 at a time. Out of 20 blue marbles, you can select 5 marbles in 20C5 ways. So number of favorable outcomes is 20C5. Now total number of outcomes. Total number of outcomes मतलब how many ways you can select 5 marbles. So total आपके पास 30 plus 20 plus 10 60 marbles are there. उसमें से आपको 5 marbles choose करना. There are 60 C5 ways. Understood? So the answer is 20 C5 divided by 60 C5. Clear? 20 C5 Yeah. divided by 60 C5. So you can simplify that if you want. Like 20 C5 easiest method मैंने बोला 20 से शुरू कर देना. Then 19, 18, 17, 16 5 units पीछे आ जाना. Then 1 से शुरू divided by 1 to 1 से शुरू करके 5 units आगे जाना. So that will give you 20 C5. Then 60 C5 मतलब 60 से शुरू कर देना. 5 units पीछे 60 into 59 into 58 into 57 into 56 divided by 1 से शुरू करके 5 यूनिट्स आगे. सो क्या होगी ये 5 5 1 2 3 4 5 डिनोमिनेटर दोनों का कट हो जाएगा. बाकी आपको मिल जाएगा. इट इज 20 into 19 into 18 into 17 into 16 divided by 60 into 59 into 58 into 57 into 56. So simplify करेंगे तो
you will get the answer. Okay, so this is okay, 20c5 divided by 60c5. अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा. सो इसी तरीके फॉर्मूला क्या है, 20 एन सी आर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ऐसे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. बट एनीवे ओके, नाउ उसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, probability that at least one, देखो probability that at least one will be green. Okay, okay, so एटलीस्ट आपने कितना मार्बल्स चूज कर रहे हैं, 5 मार्बल्स. उसमें से कितना ग्रीन होना चाहिए, कम से कम 1. एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1. सो एटलीस्ट 1 मतलब 1 ग्रीन हो सकते हैं, राइट, 1 ग्रीन और 2 ग्रीन और 3 ग्रीन और 4 green or all the 5 are green. There are 5 situations, right? Isn't it? At least one green मतलब आउट ऑफ 5 मार्बल्स चूसन उसमें से कोई एक तो ग्रीन हो सकते, तो कम से कम एक ग्रीन हो गया. अगर 5 में से 2 ग्रीन हो गए तो भी एटलीस्ट 1 ग्रीन है, मीन्स कम से कम तो एक दो ग्रीन है. 3 ग्रीन हो गए तो भी एटलीस्ट 1 ग्रीन है. 4 ग्रीन हो गए तो भी एटलीस्ट 1 ग्रीन है. 5 ग्रीन है तो भी एटलीस्ट 1 ग्रीन है. Isn't it? Give me a response. Do you understand? Yes, sir. So you can see that you have to find the probability of हर एक situation. You have to find the probability of every situation and you have to add. तो ये कितना लंबा हो जाएगा. 1 ग्रीन मतलब इसमें से भी अलग अलग ऑप्शन है. 1 ग्रीन मतलब इसमें से अलग अलग ऑप्शन है. फर्स्ट यू आर टेकिंग 5 balls, उसमें से फर्स्ट 1 ग्रीन, बाकी दोनों दूसरा कुछ कलर. देन ये समझने के लिए बता रहे. देन सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड 1 ग्रीन, बाकी सब different. डिफरेंट. थर्ड 1 ग्रीन, बाकी सब डिफरेंट. फोर्थ 1 ग्रीन, बाकी सब डिफरेंट. फिफ्थ 1 ग्रीन, बाकी सब डिफरेंट. सो 1 ग्रीन में देर आर 5 सिचुएशंस. ओ 5 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना. वैसे 2 ग्रीन में फिर से देखो, 2 ग्रीन मतलब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बहुत सारा सिचुएशन है. जैसे 2 ग्रीन में है तो फर्स्ट 2 ग्रीन हो सकते, नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड ग्रीन हो सकते, फर्स्ट एंड फोर्थ ग्रीन हो सकते, फर्स्ट एंड First and फिफ्थ last. ग्रीन हो सकते, देन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ऐसे बहुत ज़्यादा सिचुएशन है ना. तो Yes, sir. इतना सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी निकाल के सब ऐड कर देना बहुत बहुत लंबा हो जाएगा. सो लास्ट ईयर, सो 10वीं में अपने एक देखा होगा, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट था, आपको याद है कि मुझे पता नहीं, एक अच्छा सा कंसेप्ट था, एटलीस्ट वन is the complement of none. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट वन मतलब इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नन. लाइक दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. लाइक इधर आप बोल रहे एटलीस्ट 1 ग्रीन, सो उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको पता है ना, जैसे ये एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मतलब उस इवेंट के अंदर नहीं है बाकी सब कुछ एलिमेंट्स. गॉट इट? तो एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कम से कम एक ग्रीन आ रहे, सो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, नो ग्रीन इज कमिंग, राइट? सर, अंडरस्टूड? हाँ. सर वो संकेत आउट हो गया था तो फिर वो अब
एडमिट में आ गया, मतलब वेटिंग रूम में ओके गया है। ओके ओके, कर दिया, किया था, फिर से वो चला गया था, मुझे लगा कि ओके। देखो एटलीस्ट वन इज द कॉमन, इधर क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। सो एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन एक इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई भी ग्रीन नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। एटलीस्ट वन ग्रीन मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है एक भी ग्रीन नहीं है। सो एक भी ग्रीन नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कम से कम एक तो ग्रीन है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो आपको, आपके पास आइडिया है कि एक इवेंट, एक इवेंट एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। वन। तो इसमें से आपको आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट चाहिए तो इट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। Okay, so यस सर। this is very very important concept, very very important concept. At least one matlab it is the complement of none. So probability of, so I'm just writing here in the space here. So I know its complement is none, so I can say that it is one minus probability of no green. Understood? One minus probability of no green, none of them are green. क्योंकि एटलीस्ट वन ग्रीन मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है नन ऑफ द आर ग्रीन। सो एटलीस्ट वन का प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मतलब बाकी कोई भी कलर हो सकते हैं। सो नो ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए। सो कितना फेवरेबल केसेस, रिमेनिंग 30 में से रिमेनिंग 5। 30 में से 5, सो 30C5, रिमाइनिंग 30 में से 5, 30C5, total number of cases is 60C5. So 1 minus 30C5 divided by 60C5। देखो एक ही स्टेप में आपको आंसर मिला। इधर है तो आपको क्या करना, एटलीस्ट वन डायरेक्ट हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो, डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो एक ग्रीन, सो उसका अलग अलग सिचुएशन है, 5 सिचुएशन। दो ग्रीन है तो भी एटलीस्ट एक ग्रीन है, सो उसमें से भी बहुत सारा सिचुएशन है, उसमें से सिचुएशन आएगा 5C2 सिचुएशन आएगा, सब ऐड करना, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना। देन थर्ड ग्रीन 5C3 ways are possible, so वो हर सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी निकालना। देन फोर ग्रीन का हर सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी निकालना। फाइव ग्रीन का हर सिचुएशन का एक ही सिचुएशन है पूरा ग्रीन, सो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। देन ये सब ऐड कर देना, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट हमने ये कंसेप्ट यूज किया, एटलीस्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नन, कोई भी ग्रीन नहीं उसका कॉम्प्लीमेंट। सो इसका प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नो ग्रीन। सो दैट इज वेरी इजी। नो ग्रीन है तो निकालना बहुत आसान है। नो ग्रीन मतलब टोटल आपके पास 30 ग्रीन का है, बाकी बाकी 30 ग्रीन नहीं है, 20 ब्लू एंड 10 रेड। सो उसमें से 5 का फेवरेबल केसेस मतलब वो 30 में से 5 कार्ड चूज कर देना। सो उस 30 में से 5 मतलब 30C5 ways are there and total number of ways are 60C5, so 1 minus 30C5 divided by 60C5, got it? यस सर। Yeah, सर अगर एटलीस्ट 2 की होती तो प्रोबेबिलिटी तो? एटलीस्ट 2 के तो क्या कर देना, वन माइनस ऐसे, एक मिनट है, ऐसे कर देना, एटलीस्ट 2 है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन। ओके ऐसा, सर। ऐसा समझ में? यस सर। या, सो देखना सिचुएशन देख के उसी हिसाब से कर। सो गोबर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, एटलीस्ट 2 है तो ऐसे कर देना, प्रोबेबल वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन, गॉट इट? यस सर। या, ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी में आपको कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत जरूरत है।
Look at this. Four cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. How many cards drawn? Four cards. Now, what is the probability of obtaining three diamond and one spade? Probability of three diamond and one spade. So, very simple. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay. Number of favorable outcomes divided by total number of Number of outcomes. outcomes. Now, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जल्दी लिखूंगा. कितना कार्ड चूज करना है? 4 कार्ड्स. 4. कितना कार्ड्स है हमारे पास? 52 कार्ड्स. 52. So 52 कार्ड्स में 4 कार्ड्स चूज करने के लिए how many ways are there? 52 see 4 ways. Right? Now, so now total number of cases हो गया. अभी favorable cases कितना है? Favorable cases. So favorable cases में आपको 3 डायमंड चूज करना है एंड 1 स्पेड चूज करना है. In how many ways you can select 3 diamond? Say, आपने multiplication theorem पढ़ाई किया था permutation में. If one event can Yes. happen in m ways, another one can happen in n ways, then together can happen in m into n ways. So 3 diamond can happen in how many ways? 13 में से 3. 30 डायमंड है. So 13 में से कितना चाहिए? 3. 1 स्पेड हाउ मेनी वेज? 13 स्पेड है, उसमें से 1 स्पेड सेलेक्ट करने के लिए 13 C1 ways. So दोनों टुगेदर कैन हैपन इन 13 C3 into 13 C1. आया समझ में? Yes, sir. Yeah. Okay. Now look at this. ये die has 2 faces, each number with 1. So normally die में 6 face हमें पता है, die में 6 face है. उसमें से normally क्या लिखते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं. बट इधर ऐसे है कि 6 फेसेस में ऐसे लिखा है कि 2 फेस ईच विथ नंबर 1. सो 2 फेस में 1 लिखा है. 3 फेस में सॉरी 3 फेस में 2 लिखा है. 3 फेस में 2 लिखा है एंड 1 फेस में 3 लिखा है. Instead of writing 1 2 3 4 5 6 on the faces, ऐसे लिखा है कि 3 फेस में 1, 2 फेस में 1, 3 फेस में 2 and 1 फेस में 3. Now, if the die is rolled once, एक बार throw किया, what is the probability of getting a 2? What is the probability of getting a 2? बोलो, कितना 2s are there? कितना 2s are 3. there? 3. 3 2s are there ना. So 3 out of 6, which is 6. 1 by 2. 1 by 2. Probability of getting 1 or 3. 1 or 3. So 1 और 3 के लिए 1 के लिए कितना? 2. Then 2 by 6. so 1 और 3 है ना. So 3 का भी काउंट. 3 कितना फेस में? एक फेस में. 1. So टोटल 1 probability of 2. देखो ऐसे लिखा है कि 2 फेस में 1 लिखा. देन 3 फेस में 2 लिखा है एंड 1 फेस में 3 लिखा है. ऐसे लिखा है. सो 1 के लिए कितना फेसेस? 2 फेसेस. 3 के लिए कितना फेसेस? 2. एक फेस. तो टोटल 1. 3 faces. So 3 3. faces divided by 6, which is 6. 1 by 2. 1 by 2. Now, probability of
नॉट थ्री। नॉट थ्री मतलब थ्री छोड़ के, थ्री एक ही फेस में थ्री है, बाकी फाइव फेस में थ्री नहीं है, सो कितना? 5/6. 5/6. 5 by 6. 5/6. Okay, that's all. Now, question number 4. Lottery. In a certain lottery, 10,000 tickets are sold. Okay, 10,000 tickets sold. 10,000 tickets sold. 10 equal prices. 10 equal prices. What is the probability of not getting a prize? हमें चाहिए probability of not Getting getting price. a prize. Price. Situation 1. आपने बाय वन टिकट, आपने एक टिकट परचेज किया था। ओके, ये एक टिकट परचेज किया आपने, तब आपको नॉट गेटिंग ए प्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? टेन थाउजेंड में कितना प्राइसेस है? 10 इक्वल प्राइसेस है ना। Yes, sir. सो उसका मतलब बाकी कितना को प्राइस नहीं है? 9,990। 90. तो डिवाइडेड बाय 10,000, इसमें से कोई एक है तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें से 9,990 टिकट्स, इसको क्या है? टिकट्स को प्राइस है। Price Not नहीं है. एंड 10, सॉरी प्राइस नहीं है, नो प्राइस। not 10 price. टिकट्स को प्राइस। Price. Price है. ओके, सो आपने एक ही टिकट लिया, आपको प्राइस मिलने का प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 10,000, बट नॉट मिलने का प्रोबेबिलिटी 9,990 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000. नाउ सेकेंड सिचुएशन, आपने 2 टिकट लिया था, 2 टिकट्स। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस? 2 टिकट्स लिया है तो नॉट गेटिंग ए प्राइस। नॉट गेटिंग ए प्राइस, कितना टिकट को प्राइस नहीं है? 9,990। 900, 990. सो उसमें से 2 होना चाहिए आपका। Yes. 9,990 divided by C2 divided by total number of cases is 10,000 C2. Got it? Not price, not getting price, not getting उसका probability। So आपने 2 टिकट लिया, आपको प्राइस नहीं मिलना है तो मीन्स इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्राइस, मतलब दैट 2 टिकट्स बिलोंग्स टू दिस 9,990। वो दोनों टिकट इसमें से होना चाहिए, राइट? So favorable cases is 9,990 divided C2 favorable cases. Total is 10,000 C2. Clear? Now third, आपने 10 टिकट्स लिया, सो इट इज सेम, 10 टिकट्स लिया, आपको प्राइस नहीं मिलना है, नहीं मिल रहे, उसका प्रोबेबिलिटी, सो प्राइस नहीं मिल रहे, 9,990 C10 डिवाइडेड बाय 10,000 C10। क्लियर? Yes, sir. या ओके, Yes, sir. समझ समझ में आ गए तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सो 100 स्टूडेंट्स आर देयर, 2 सेक्शंस, so उसमें एक सेक्शन में 40, दूसरा सेक्शन में 60, 60. and if you and your friend are in this class, this 100 में you and your friend, you two are there, maybe Gopal and Sanket, ऐसे नहीं तो Gopal and Neeraj, ऐसे you two belongs to this out of 100 में तुम है, दोनों है। So उसको 2 सेशन कर दिया, 11th ने तो 10th ए 10th बी, सो दो, एक सेशन में 40 स्टूडेंट, दूसरा सेशन में 60 स्टूडेंट्स। So what is the probability that you both enter the same section? Both enter the same section. 100%. सोच के, both enter the, you both enter the same section.
है ना, probability that both enter the same section. that मतलब two cases. One is both in section with 40 students or both in section with 60 students. दोनों आए तो भी चलेगा ना, करेक्ट. Yes, sir. आइदर फर्स्ट सेक्शन में, आप दोनों फर्स्ट सेशन में आए तो भी एक ही सेशन में आएगा. नहीं आपने सो इसको आप नाम दे रहे थे, फिलहाल आपको समझ में आने के लिए हम नाम देता हूँ इसको. ये कॉल करता हूँ, दिस इज बी. सो बोथ इन सेक्शन ए और बोथ इन सेक्शन बी. देन उस दोनों सिचुएशन है, दो सिचुएशन, सेक्शन ए में भी आ सकते हैं दोनों और सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, करेक्ट. नाउ सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ दिस एंड यू हैव टू ऐड. नाउ मुझे बताओ what is the probability that you both in first section. So उसके लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस चाहिए डिवाइडेड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस चाहिए. I think the time will wind up now. We will discuss this question in tomorrow's class, okay? Otherwise the call will be dropped.